Hello, I'm Dr. Samuel from Ghana, Yeah. the CEO of Dr. Sami Scientific Herbal Wow. and Alternative Medical Clinic. Okay. How is London? London is cool, London is nice, yeah. My first time visiting and I must confess I love the place. Okay. Okay. Yeah. Yeah. Okay, sir. Enjoy yourself. Thank Sure, you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Good morning, guys, from London. So today it's our third day. और आज डॉक्टर्स लोग का कॉन्फ्रेंस का दिन आ गया है और हमारी सिस्टर को जैसे तैयार हुई है विच इज़ लुकिंग वेरी फंटेस्टिक है अभी यहाँ पे बज रहे इट्स 9 AM ऑलमोस्ट इन द मॉर्निंग और बस आधे घंटे के बाद कॉन्फ्रेंस चालू हो जाएगा और मेरे को लगता है शायद शाम तक तो जाएगा ही जाएगा। तो देखते हैं आज अगर जल्दी हो गया इन केस तो कहीं बाहर जाके कोई जगह पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल दिन के लिए अपडेट करता हूँ गाइस। सो गाइस दिस इज़ द कॉन्फ्रेंस रूम जो आज मेन कॉन्फ्रेंस सभी डॉक्टर्स लोग का होने वाला है। एक्साइटेड टू गो इनसाइड। अभी सब लोग रुके, सब लोग का अभी नंबर आने वाला है। अभी सब लोग को अंदर एक एक करके जाना है। यहाँ पे गाइस जो भी लोग खड़े सब लोग डॉक्टर्स हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड से आए। लेट कहाँ से होगा? मैं अकेला इधर नॉन डॉक्टर। कहाँ टाइम पे आए? Walk slowly so that your film is made properly. Okay? Yes. Slowly, and look toward the camera. ठीक है? Here we go. One by yours. Oh my friend Abraham, very good man. See you again later. ओके एज यू कैन सी यहाँ पर दुनिया के अलग अलग कंट्रीज से होम्योपैथिक के डॉक्टर्स आए हुए हैं गाइस। एंड यहाँ पर हर एक डॉक्टर को वहाँ जाकर स्टेज पे अपना एक्सपीरियंस एंड अपने केस के बारे में बताना है। एंड सबसे पहले बोलने के लिए आते हैं हमारे डॉक्टर समीर चौकर सर। सो गाइस नाउ अभी हम लोग का ब्रेक टाइम है, मीन्स लंच टाइम है। सब लोग खाना खाने के लिए अभी रुके। इसके बाद मेरी सिस्टर डॉक्टर शेफाली राठौड़ का होने वाला है। मैं भी रुका हूँ। This doctors are from Ghana, right? Yeah. Can you please introduce yourself? All right, I am Abraham from Ghana, and actually this is the reason why I'm here for the program. We've been practicing about back in Ghana, and we got it as a chance, opportunity, to also come and then interact with our fellow Correct. practitioners, right? And as I came here, it has been such a great thing to have. I've met so many doctors, eminent,
scholars. Yeah. In fact, the lectures that they've given, Correct. delivered, such an awesome, fantastic. Thank you. I've seen that they are on top of their jobs. Yes. And they've learned homeopathy to its core. It's cold. Yeah. Correct. I have appreciated their time in interacting or in presenting. Thank you, sir. Thank you, Thank you, sir. sir. And your friend, sir, can you please introduce yourself? Hello, I'm Dr. Samuel from Ghana, Yeah. the CEO of Dr. Sami Scientific Herbal Wow. and Alternative Medical Clinic. Okay. How is London? London is cool. London is nice. Yeah, my first time visiting, and I must confess I love the place. Okay. Yeah. Yeah. Okay, sir. Enjoy yourself. Thank you. Thank you very much. ऑलराइट गाइस, खाना डन. खाना खाने से पहले एक्चुअली दिखाना चाहिए था, लेकिन खाना खाने के बाद दिखा रहा हूँ. सो दिस इज स्टीम राइस, पनीर, दाल. दिस आई थिंक नहीं, दिस इज दाल तड़का, भिंडी फ्राई. दिस इज नान ब्रेड, मिक्स वेजिटेबल, चॉकलेट फज केक, एंड दिस इज फ्रेश फ्रूट सलाद. बहुत अच्छा था गाइस, सुपर. यहाँ पे कुछ पापड़ है, मिक्स गार्डन वेजिटेबल है, अचार एंड कर्ड. खाना वो सुपर चुम्मा खाना था गाइस, चुम्मा एकदम, क्या बोलते हैं ना, एकदम टेस्टी एंड बिल्कुल घरेलू जैसा. और आज यहाँ पे देखिए धूप आज निकली नहीं है, बहुत मस्त एटमॉस्फेयर है. यस, अभी खाना हो गया. अभी वापस से आधा डॉक्टर्स लोग और बाकी है, मेरी सिस्टर का भी बाकी है. सो यस, अभी कभी होता है पता नहीं, थोड़ा टाइम तो हो गया है. चलिए, होता है कल. ठीक है, अपडेट करता हूँ. Everybody, myself Dr. Shifali Rathod from Mumbai, India. I'm practicing since 2008, but I do practice homeopathic plus allopathic also. So general practice also with homeopathy, but I get so many cases that some people come do for homeopathy. You give me homeopathic, like. Now I'm going to talk today about a case of urinary tract infection. First, we'll know what is urinary tract infection. It is the most common disorder seen in females. Right in India to anywhere in the world, you see so many cases of urinary tract infection you get nowadays. Because in India it's pure hygienic. Then in female it is more commonly executed, like I may say, each 10 out of 2 females will be having UTI in presence. Maybe she is a young lady or an old lady, but she is going to get UTI in some of her this life once. So today we'll talk about it. What is urinary tract infection? So it is the presence of microorganisms in the urinary tract. At least 10 to 5 colony forming units per milliliter of freshly passed urine is regarded evidence of UTI. There are some predisposing factors, like it is mostly common in female, in pregnancy, after sexual intercourse. Then the second one is failure of complete bladder emptying, prostatic obstruction, neuropathic bladder, stones. You've got papillary necrosis, diabetes mellitus, analgesic nephropathy, sickle cell disease, then polycystic kidneys, vesicoureteric reflex, infrequent, incomplete voiding, bladder catheterization. So many factors are responsible for all this. So what are the organisms responsible for urinary tract infections are Escherichia coli, the most commonly seen organisms. If you do a urine culture, whenever after the blood test and urine routine culture, you will see this is the most bacterial organism which is affecting UTI. The second one is Staphylococci, third Enterococci, the fourth is Klebsiella, Pseudomonas, then the fifth is M. tuberculosis.
Now, what are the clinical features you get in urinary tract infection? First of all, you will get sudden onset of fever with rigors. So there is fever which is coming suddenly. Then you've got pallor, malaise. You may have even nausea and vomiting associated with it. Then you've got pain, tenderness in the loins, flanks. So many different symptoms every individual gives. Females will have abdomen pain quite frequently in UTI. So there are two types of urinary tract infection. One is the acute one. The second is the chronic one. Acute will be like it is coming suddenly and it will be for some days. But the chronic infection is coming and it is recurrently for many weeks because the patient is on allopathic. Lot of time doctors prescribe allopathic and most of them are the 4th generation antibiotics like cefixime. Then you've got nitrofurantoin, you give amoxicillin which have got marked side effects like diarrhea, dysentery, then you can get rashes, skin infections, lot of headache. So many side effects it goes to allopathic. When an allopathic practitioner is subscribing urinary tract all the infection medicines, it is consuming lot of time and lot of infection they get, like side effects are too much. Always the patient comes to me, they are telling, no madam, you don't go for allopathy, you give me something homeopathic. That will be like without side effect and I'll be more better with this. So I had a case like before some months ago, a patient named Mrs. Varsha Kharote residing in Mumbai. She had come to me 48 years. She had a history of recurrent urinary tract infection since the last 9 months. She had to be many doctors who prescribed her a lot of antibiotics for weeks and weeks. But then she developed colitis, she developed rashes, and she was like very much disturbed also because of allopathic medicines. So I told her, what are your urine investigation? Actually, she was not ready to give me the investigations of urine, but she had a report 9 months back that showed bacterial infection in the urine. She had got pus cells +4. That time she had brought, but she was not so much my regular patient that time. And she presented me like, madam, whenever I go to urine, I have got a burning pain while passing urine, while completing urine. And it is associated with blood. So that is hematuria. And the pains were like cutting like knife pains. She told me I used to scream when I used to pass urine. I used to scream and I used to cry a lot because it was very much painful for her. Like while she was passing urine, she was avoiding urine, it was too much. So even she had blood in the urine, she had got constant urge to urinate. Then after an urine, and one more symptom she had, that was she had mucus in her stools with a stabbing headache. She used to get always that headache and she was actually very tensed because always on this 9 months and this all allopathic had destroyed her body completely. She was disturbed. And then she used to pass even urine in drops and drops, like a few drops of urine. So one medicine came across that was Cantharis. I gave her Cantharis in a dilution form for 3 days. I told you take it and you tell me how the reports are or how you feel better. After 4 to 5 days she came to me and she said, madam, today I am very much better. I didn't have pain. My like blood is not coming in the stools and I've got marked relief in burning because she was having a lot of burning after urination. So that has stopped. The pains were stopped. Then I continued that Cantharis at least for 10 days. I told her you take in tablet form. 200 I prescribed her for 10 days. Again she had come to me that still the symptoms are coming, going. So with that I told, okay, we'll increase the dose. Then I increased the dose to TDS. So then after a period of 25 days, she had gone for routine investigation of urine in which the bacteria was only 1, which was +4 had come to 1. So that time now she was too much, like she told me that I have got lot of relief in burning
Even in my this while passing urine, I don't get any pain. I don't have any abdomen pain. Even the headache was reduced. So you have got lot of medicines and UTI for homeopathic like Cantharis. You can use Econite, Sarapsarila. You have to use Barbaris, but Barbaris is very good in stones. But this medicine helped me a lot to treat her urine tract infection. After that, she is coming to me regularly for other problem, but now the UTI is definitely gone. So better, if anybody has got UTI, better than allopathic. If you prescribe homeopathic, it is much better because it has no side effects. She can take it for a long time, and she took it and now she is still taking it because she has a fear it will again come up. So she is still continuing, but she is continuing alternate day now. According to her, I told her, now you stop it, it's already fine with you. But she tells me, no madam, it is again going to come. So 1 more month we will see. And this is my case, and she was really treated well with Cantharis. Thank you. सो गैस शाम हो गया, 4:30 बज रहे अभी भी डॉक्टर्स लोग का चालू है। अभी 2-3 ही बच्चा है, बस हो जाएगा मेरे को लगता है। 5:30 बजे तक हम लोग फ्री हो जाएंगे। मैं थोड़ा बाहर आ गया हूँ। सो अभी आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ जो मैंने आज अभी देख रहा हूँ, हमारे होटल का ही है। कैन यू सी दिस गाइस? ये यहाँ से आप उबर बुक कर सकते हो। और एक और बात, ये अम्ब्रेला है, अभी थोड़ा सा बारिश का टाइम हो रहा है, इसके वजह से अम्ब्रेला यहाँ पे आप लोग अम्ब्रेला रेंट कर सकते हो। रेंट अम्ब्रेला G3 GPP फॉर 48 आवर्स। वाओ! और जस्ट लुक एट द क्वालिटी ऑफ द अम्ब्रेला। वाओ! सो फाइनली हमारे सारे डॉक्टर्स का कॉन्फ्रेंस कम्स टू एन एंड, एंड इसके बाद हम सभी ग्रुप फोटो सेल्फी निकालते हैं, नंबर एक्सचेंज करते हैं और जानते हैं एक दूसरे को। सचमुच गाइस, मुझे एक पल के लिए भी बोर या डिस्टेंस नहीं लगा, बिकॉज ऑफ ऑल द थैंक्स टू डॉक्टर्स जिन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन और केसेस बताए। इस वीडियो में ओनली मेरी सीस का स्पीच दिखा पाया गाइस, क्योंकि सभी का हर एक डॉक्टर का इंडिविजुअल निकालना मुमकिन नहीं था। अगर आप लोग चाहते हैं कि हर एक डॉक्टर का स्पीच और उनका केस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा नीचे, मैं इसी चैनल पे वीडियो अपलोड करके आपको दिखा दूँगा। जिस होटल में हम लोग खाना खाने जाते हैं, हम लोग बैठ गए और मैंने वही गलती की, जो पीने का खाली बॉटल है वो लाना भूल गया। वो मैं एक सर की इधर ही छोड़ के आ गया, अभी उधर ही जा रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था कि लंदन की स्ट्रीट पे ऐसा भाग के जाऊँगा। You have to be very careful. भागो 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 भागो। होटल आ गया, चलो अच्छा है, डिस्टेंस कम है इसलिए ठीक है, नहीं तो बैंड बच जाता, क्योंकि इधर वाटर बॉटल इज़ वेरी एक्सपेंसिव। खाली बॉटल भी नहीं था उनके पास, ये अभी जाना पड़ेगा। यो ऑलराइट गाइस, इट्स टाइम टू स्लीप। आज का दिन भी बहुत अच्छा था। डॉक्टर्स का जो मेन इवेंट था जो आज ही था, उसके लिए आज हम लोग उसके लिए तो आए थे स्पेशली। सो सक्सेसफुल रहा, अच्छा रहा, बहुत बढ़िया रहा। और बाकी का तो आपको वीडियो में दिख गया होगा कैसे सभी डॉक्टर्स का फ़ोटो निकाले, टाइम स्पेंड किया, एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए, कहाँ से कौन से कंट्री से डॉक्टर्स आए थे, कितने, कोई अफ्रीका से आया था, कोई दूसरे फॉरेन कंट्री से आए थे, इंडिया से थे। वाओ, इट वाज वेरी नाइस, वेरी गुड। खाना बहुत ज़्यादा खा लिया आज क्योंकि यहाँ का खाना गाइस बहुत अच्छा है इतना। सो यस, अभी हमारे पास अब कल का और परसों का दिन है। अब हम ये दो दिन में मैं पूरा कोशिश करूँगा गाइस आप लोग को जितना हो सके उतना अच्छी चीज़ें दिखा सकूँ। और ऑलराइट गाइस, देन मिलता है कल मॉर्निंग में। कल थोड़ा जल्दी उठ के फटाफट निकलने गए, काफ़ी कल जगह कोशिश करने गए। मैं आपको कल बताते जाऊंगा, अपडेट करूंगा कल ही, बिकॉज कुछ भी श्योर नहीं कि पहले कहाँ जाने वाले, कैसे जाने वाले, क्या है, वो कल ही डिसाइड होने वाला है।
टिल देन के लिए गाइस गुड नाइट, सी यू टुमारो इन द मॉर्निंग, बाय।